From the Republic Media Network headquarters, it's time for Arnab Goswami on the debate. Arnab Goswami on the debate. Ladies and gentlemen, in public life and in politics, you know you have the upper hand when you get the other side to respond. And that is precisely what Yogi Adityanath has done. Very straight, he went for the jugular with a call saying, Na Batenge Toh Katenge, ek rahenge to नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे. Essentially his call was, he says, if we get divided, we will be hurt. But if we stay together, we will be secure. It was a straightforward call. The call was for Hindu unity. Yogi Adityanath's point is that Hindus have to be united, not just socially, Hindus have to be united socially and politically. And one way to ensure that Hindus are divided politically is what Rahul Gandhi does. Try to divide Hindu society on the basis of caste, then take some individual caste groups, put them together with a reservoir of Muslim votes, use that as a political instrument. So the irony is people like Rahul Gandhi, what do? They divide Hindu society, break Hindu society, and try to use it for political benefit. Yogi Adityanath, in an unsparing and characteristically straightforward way, has said that if Hindus are to be secure, Hindus must be united. And he has called for Hindu unity during political campaigns and campaign speeches. He's unequivocal about it. And ladies and gentlemen, I don't think this is anything to oppose. If over 80% of the country is divided, how will the country be together? Ladies and gentlemen, these are very clear questions. More than 80% of the country are Hindus, and has the principle and the approach of Hinduism not contributed in the greatest way to making the country truly secular? But there is a group of people nowadays who only like pseudo-secularism. So for them, Yogi's call is a threat. Those who oppose Yogi's call, where Yogi Adityanath says, Batenge Toh Katenge, ek rahenge to surakshit rahenge, those who oppose Yogi Adityanath's call are actually heart of heart accepting the fact that this is so clear and unequivocal a message that it will impact crores of Hindus across the country, who will then begin to see through what Rahul Gandhi and other political parties are doing, trying to divide the Hindu vote. What Yogi Adityanath is doing is he's saying things directly. He's not trying to be subtle about it. He's not trying to be indirect about it. He's saying it very clearly. Hindus come together politically, and then he's saying come together for national interest. Ladies and gentlemen, any unity for national interest is to be appreciated and is to be welcomed. Now, why did I begin by saying that Yogi Adityanath's call has been a successful call? I'm not saying that Yogi Adityanath has succeeded in his message because he's today getting the support of the RSS. Though it is apparent and obvious to all of us that Yogi Adityanath is getting considerable support from the RSS. And he had a 2-hour meeting with Mohan Bhagwat recently, and after that, you've had a lot of RSS leaders who have come out and said that, of course, we support what he is saying. Hindu unity is necessary. And they are saying that without Hindu unity, how will we all come together? And they've even said that the upcoming Mahakumbh of 2025 should take this principle together of Hindu unity. Batenge Toh Katenge, ek rahenge to surakshit rahenge. But that's not the reason why I believe Yogi Adityanath is successful. I'm not saying he's successful because he's got RSS support. No.
I believe Yogi Adityanath has been politically successful in making this a campaign agenda ahead of the UP by-elections, which he knows he has to win, especially given the poor performance of the BJP in the 2024 elections. Yogi Adityanath is successful because his principal opposition party, their main campaign right now, is a defensive counter to what he said. So Samajwadi Party leaders all over Uttar Pradesh, Samajwadi Party posters are simply now beginning to say, na batenge na katenge. So ladies and gentlemen, the Samajwadi Party is now saying, no, we are not going to. We are not going to divide Hindu society. We are not going to break Hindu society. We are not going to cut Hindu society into pieces. Have you ever heard before this any Akhilesh or Rahul Gandhi or Owaisi, have you ever heard them come out with as defensive a response politically as this one, where they are saying na batenge na katenge, na batenge na katenge? These posters of the Samajwadi Party are being put up in Lucknow, in party offices, in their campaigns, because the Samajwadi Party is now going out of its way to try and convince Hindu society that they are not going to break Hindu society. This is a defensive move by the Samajwadi Party. And it will also give food for thought for a lot of BJP leaders. There is a more direct approach now required. Especially, ladies and gentlemen, given the fact that Hindu votes, unless completely consolidated, can often end up in a situation where, unless they are consolidated under one party, clearly consolidated, if they are divided, the BJP loses. So the BJP has realized that the only way for it to keep an upper hand is to completely consolidate the Hindu vote. What do I expect? I expect the same approach to be seen even in Maharashtra. I expect the BJP to be more clear right now as a political strategy. That's how I foresee it. Asking for a consolidation of Hindu society and a Hindu vote. And now, in national interest, talk about Hindu unity, socially, structurally and politically. Ladies and gentlemen, it's a big turn that we are seeing in Uttar Pradesh, and I believe going forward in national politics as well. A clear attempt by the BJP, supported by the RSS, to consolidate even more strongly the Hindu vote. So let's debate. आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। The clarion call for Hindu unity is growing louder. हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, पहली बार वहां का हिंदू संगठित होकर अपने बचाव में रास्ते पर आया, इसलिए कुछ बचाव हो गया। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं वहां संगठित रहना, सशक्त रहना, किसी से शत्रुता नहीं करना, हिंसक नहीं बनना, परंतु इसका अर्थ दुर्बल रहना नहीं। Batenge Toh Katenge call is making the INDI alliance nervous. Watch these posters which surfaced in Lucknow today. Na batenge, na katenge was Samajwadi Party's retort to the BJP. न तो देखो दीजिए, न तो बचेगा न कटेगा, और जो ऐसी बातें चलेगा बाद में पिटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कटेंगे तो बटेंगे का जो नारा दिया है, उसकी गूंज अब महाराष्ट्र तक सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र में भी बीजेपी इस नारे को लेकर चुनावों में उतरी है और इस नारे के काउंटर में लखनऊ की सड़कों पर पोस्टर लगाए। देखिए, ना बटेंगे ना कटेंगे, 2027 को नफरत करने वाले हटेंगे। तो देखिए, ये पोस्टर है, पोस्टर में तमाम अलग अलग धर्मों के जो लोग हैं उनकी तस्वीरें, और इसके साथ ही अखिलेश यादव की भी तस्वीर है। Batenge Toh Katenge remark have echoed in poll-bound state of Maharashtra as well. But the question is,
Why is the INDI alliance nervous over call for Hindu unity? एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। Okay, Ratnakar Tripathi, Vivek Silas of the Samajwadi Party, Congress and Samajwadi Party respectively, Tuhin Sinha of the BJP, Shantanu Gupta, author and a person who's extensively followed and written about Yogi Adityanath. So Ratnakar Tripathi, you know, I began by saying that the first successful campaign becomes when the other side starts responding. So today across UP, posters are being put up by Samajwadi Party saying, na batenge, na katenge, ya na batenge, na katenge. You know, we will not break, we will not cut. That is one success. Second is that the entire RSS is also talking about this, you know, bringing Hindu society and politically and structurally. But I believe the Samajwadi Party response is very important because it's an official response. Why have they been compelled to respond in your view? You know, Arnab, Ratnakar first, then I come. Okay, Yeah. sure. They have just put on something which they wanted to, which they think. And when you talk about RSS, BJP and others like Yogi Adityanath and all those yogis, the vultures are hissing together. They are screaming the same voices, nothing else. No, but why has Samajwadi Party been compelled to respond? Everywhere now in UP they are saying that हम नहीं बांटेंगे, नहीं काटेंगे. So in a way they are explaining. They haven't written that हम नहीं बांटेंगे, हम नहीं काटेंगे. Don't frame your words. ना बांटेंगे, ना काटेंगे. Political sermon and ना बांटेंगे, ना काटेंगे. ना बांटेंगे, ना काटेंगे. There it is. All official posters everywhere. What is written there? ना बांटेंगे, ना काटेंगे. Why you frame the wrong? ना बांटेंगे, ना काटेंगे. नहीं, बांटेंगे ना काटेंगे एक अलग चीज है. And you say हम नहीं बांटेंगे, हमने why हम? What is it? It's the same meaning. ना बांटेंगे, ना काटेंगे means what? Means what? To support BJP. No, ना बांटेंगे, ना काटेंगे means what? Into a BJP spokesperson. What does this mean? ना बांटेंगे, ना काटेंगे. What does it mean? Say that. What does it mean? What does it mean? What you want here? हम तो किसकी They बात? haven't said it. किसकी बात कर रहे हैं? I'm talking about you. You said हम ना वो बांटेंगे. किसकी बात कर रहे हैं? वो जब कह रहे हैं ना बटेंगे ना कटेंगे, वो किसकी बात कर रहे हैं? Then say it. They are saying that ना बटेंगे ना कटेंगे. What do they mean by हम ना saying? बांटेंगे, हम ना काटेंगे. वही हुई ना बात. वो योगी आदित्यनाथ के पर कोई रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना? Yogi Adityanath is just making a last effort to save the sinking boat. अरे भाई अगर वो फिर वो रिस्पॉन्ड क्यों कर रहे हैं? Parliamentary elections. तुहिन सिन्हा. I was with you. Okay, let me get a view from Tuhin. How do you read it? How do you read it? They are saying it's not. How do you read it? Arnab. Tuhin will read it in the BJP words. Arnab, when I Okay, so you hear his view at that. मेरी बारी है बोलने दीजिए रत्नाकर जी. Arnab, when I first saw these posters from Samajwadi Party, I thought they were an acceptance of their guilt of killing car sevaks 35 years back, because that is precisely what they did. They basically brutalized car sevaks. But anyway, what amazes me today, Arnab, is that, last year, please don't barge in like this. Have some courtesies, have some manners. You're a senior person, have some manners. Arnab, what amazes me is that last year we saw orchestrated attacks on the Sanatan Dharma. The very people, the same people, who quietly enjoyed Sanatan being called dengue, malaria, who quietly enjoyed calls of Sanatan being eradicated, are today petrified of calls for Batenge Toh Katenge. This shows their guilt. This shows the hypocrisy. Samajwadi Party, through Swami Prasad Maurya, had last year presided over attacks on Ramcharitra Manas, you would remember. Today they are petrified with Batenge Toh Katenge. You know why this slogan is very important? Hindu society today faces threefold threat. Threat number one, the repeated caste division, the repeated attacks on caste practiced by all opposition parties. Threat number two, the demography war. And threat number three, which is the topic of your next debate, which we will come to later, is the land war which this country has suddenly started experiencing in the form of increased activities of Waqf. So I think, Hindu society needs to be united, and I'm so glad that this slogan is ricocheting, it is echoing all across the country. This is something which is going to become a call. No, it has somewhere I would say, somewhere it has struck a chord among people.
even people who are not, overtly very sort of Hindu in their political view, who don't link their religion to their political affiliation, or who are Hindus but are still supporting the Congress or Samajwadi party, they are also beginning to think. What has happened here, Vivek, you'll have to acknowledge this, that this is such a catchphrase. कुछ तो बात होगी कि योगी आदित्यनाथ की ये बात, ये सब हर घर में इस पर बातचीत हो रही है आज कि बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। क्या गलती कर रहे हैं हम जब एक साइड ओपनली हिंदू समाज को तोड़ के उसका राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। ये पीडीए क्या है? ये पिछड़ा दलित अलायंस जो कह रहे हैं, उसमें आप इस बात को क्यों नहीं मानते हैं कि आप उनको अपने राजनीतिक गणित में मुस्लिम वोट के साथ मिला के पीडीए, मुस्लिम पिछड़ा दलित अलायंस, आप एमपीडीए बोल दीजिए। आप नहीं कहना चाहते, आपको मानना पड़ेगा कि आप एक रिलीजन के साथ डिवाइडेड हिंदू सोसाइटी की अरिथमेटिक करके आप जीतना चाहते हैं, और दूसरे साइड में वो कहने, देखिए ये हिंदुओं को कहने आपको तोड़ के, है ना, फिर आपके अलग अलग पीस को लेके मुस्लिम वोट के साथ मिला के ये लोग जीतना चाहते हैं। ये सच्चाई है, आप स्माइल कर रहे हैं, वही सच्चाई सब लोग जानते हैं। आप क्यों नहीं कहते ये एमपीडीए अलायंस, आप क्यों इसको मुस्लिम पिछड़ा दलित अलायंस नहीं कहते? आई वॉन्ट टू नो वाई यू डोंट कॉल इट एमपीडीए अलायंस। इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि पहले तो एमवाई कॉम्बिनेशन की बात हुई है ना शांतनु? Exactly. That's how they ran. अब मगर अभी आप डिलिबरेटली मुस्लिम पार्ट निकाल रहे हैं। आप मुझे बताइए, विदाउट मुस्लिम वोट कैन यू विन? आप विदाउट मुस्लिम वोट कैन यू विन अ सिंगल कंस्टिट्यूएंसी इन यूपी? अर्नब जी, कैन यू विन अ सिंगल कंस्टिट्यूएंसी विदाउट मुस्लिम वोट? कैन आई रिस्पॉन्ड? नो, आप मुस्लिम को क्यों इग्नोर कर रहे हैं ये पीडीए? कैन आई रिस्पॉन्ड? नो, ये आप ऑन माय क्वेश्चन। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल, पीडीए स्टैंड्स फॉर पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। आप थोड़ा सा गलत है यहाँ पर, मैं आपको करेक्ट कर दूं। अल्पसंख्यक अगड़े और आधी आबादी। पिछड़ा पीडीए मींस पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अच्छा ठीक है, मैंने आपको डिलिबरेटली, आप मेरी बात, मैंने डिलिबरेटली ये सवाल पूछा क्योंकि मैं जानना चाहता हूं आप मैं कह रहा हूं, आप देखिए, आप पहले खुलकर, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप एमवाई पॉलिटिक्स की बात करते थे, मुस्लिम यादव पॉलिटिक्स। एम आई राइट और रॉन्ग? मुस्लिम यादव पॉलिटिक्स की खुलकर बात होती थी कि नहीं होती थी? अभी आप डिलिबरेटली एक को आप बोल रहे हैं अल्पसंख्यक और आदिवासी। क्या कह रहे हैं आप? अल्पसंख्यक और पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक और अगड़े आधी आबादी। आधी आबादी इंक्लूड्स एवरीवन। अच्छा, सो आप मुस्लिम क्यों नहीं कह रहे? अरे अल्पसंख्यक कौन है सर? मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। मींस माइनॉरिटी इन इंग्लिश। नाउ आई एम आस्किंग यू वेरी सिंपली, माइनॉरिटी दैट इंक्लूड्स मुस्लिम्स, दैट इंक्लूड्स क्रिश्चियंस, that include Jainis, that include Parsis, even Buddhists. Then can you tell me, विवेक साइलस, मैं किताबी पॉलिटिक्स की बात नहीं कहता, कितने पारसी हैं उत्तर प्रदेश में? जरा शांतनु गुप्ता को बताइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं, कितने पारसी? मैं कह रहा हूँ पूरे प्रदेश में। आप कितने? पूरे प्रदेश में 100 पारसी, 100 पारसी। अच्छा, वो आपके साथ, आप मुस्लिम क्यों नहीं कह रहे? वेट, लेट मी, आप मुस्लिम क्यों नहीं कह रहे? आप मुस्लिम क्यों नहीं कह रहे? मैं आपकी बात मानता हूं कि आप अल्पसंख्यक की बात करें। आप पहले एमवाई मुस्लिम यादव पॉलिटिक्स की बात करते थे। अल्पसंख्यक में सब आ जाते हैं अर्नब जी। अच्छा, अल्पसंख्यक में मुस्लिम भी आ जाते हैं। काउंटर आ रहा है, टू इन काउंटर, खत्म करेंगे। टू इन काउंटर, 10 सेकंड काउंटर, टू इन। मैं इनको बता रहा हूं ये क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि ये इन हदों तक जा चुके हैं। इनके दो फॉर्मर एमपीज एसटी हसन और शफीर उल बर्क, आपके दो एमपीज ने खुले तौर पर शरिया लॉ की वकालत की थी आज से 3 साल पहले, और शफीर उल बर्क ने स्वागत किया था तालिबान का टेक ओवर। तो अब किस मुंह से आप नाम लेंगे मुसलमान? लेकिन आपकी सारी पॉलिटिक्स उन्हीं के इर्द गिर्द है। नहीं, you need to answer this question. 15 हुआ, 15। Let me, two things. Why have you put up posters saying na batenge na katenge? Let me tell you what the real point is. Actually, if you look at the Bharatiya Janata Party, how they campaigned in 2024, it was Shamshan Kabristan, it was 80-20, it was Eid Diwali, it was Mangal Soot, it was Bhais, it was कपड़ों से पहचान लेते हैं. Similarly, they have nothing to say. बटोगे तो कटोगे. You have seen what Giriraj Singh is doing in Bihar.
You have seen what Hemanta Biswa Sarma is doing in Jharkhand, the type of campaign, the vicious campaign that the Bharatiya Janata Party is putting up in the country is very dangerous at the moment. Let me tell you what happened in Karnataka. Why are you responding? Why if Yogi Adityanath, my question is, what happened in Bengal? I believe there is a difference. There is a fundamental difference, in case you don't see it, between the previous approach and this approach. And let me tell you why. Let me tell you why. The difference in Yogi Adityanath's approach is, it is very differently because it is very direct. It is not subtle, it is not couched, it is not indirect. किसको बांटने की बात कर रहा हूं? हिंदू समाज। नहीं, किसको काटने की बात? हिंदू समाज। नहीं, काटने की किसको बात? हिंदू समाज। हिंदू समाज को काटने की बात नहीं कर रहे। आप हिंदी समझते हैं। वो ये कह रहे हैं that if you get divided, you will get hurt. आपको काटने की बात कर रहे हैं? काटने नहीं। बैठे बता किसको काटने की बात कर रहे हैं? समाजवादी की बात तो आप ही लोग कर सकते हैं। तो इनसेना viewers. And by the way, I'm asking a question. Do you agree with Yogi Adityanath's call? बटेंगे तो कटेंगे। किसको काटते थे? हाँ? उल्टा सवाल समाजवादी पार्टी को तुहिन सिन्हा ने पूछिए। क्या पूछा आपने? आतिक अहमद किसको काटते थे? इमरान मसूद किसको काटने की बात कर रहे थे जब बोटी की बात कर रहे थे? इमरान मसूद किसकी बात कर रहे थे? नहीं, इमरान मसूद किसकी बात? तो आप कांग्रेस से पूछिए ना। इमरान मसूद किसको काटने की बात कर रहे थे? अच्छा, और अगर यूनिटी की बात है, अगर यूनिटी की बात है, एक ही है, यही तो हम कह रहे हैं। नहीं, आप सब एक हैं। वन मिनट, अगर यूनिटी की बात है तो जब भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद कहते हैं मुस्लिम और दलित हो, मुस्लिम एंड दलित, बाकियों की बात नहीं कर रहे, राष्ट्रीय एकता की बात नहीं कर रहे, कह रहे मुस्लिम दलित। राष्ट्रीय एकता नहीं, भारत के लिए नहीं, पूरे देश के लिए नहीं, नवनिर्माण के लिए नहीं, भारत राष्ट्र सर्वोपरि के लिए नहीं, मुस्लिम दलित। ममता बनर्जी क्या कहती है? मुस्लिम शुड बी यूनाइटेड अगेंस्ट बीजेपी। ओवैसी क्या कहते हैं? मुस्लिम शुड बी यूनाइटेड एज वन फोर्स। अबू आजमी क्या कहते हैं? मुस्लिम शुड कम टुगेदर। नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा? इस कंस्टिट्यूएंसी में मुस्लिम मेजॉरिटी है, एक साथ हो जाओ, हिंदुओं को हटा दो। फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा? कि मुस्लिम्स मस्ट कम टुगेदर फॉर सर्वाइवल। तो एक लीडर योगी आदित्यनाथ अगर हिंदू यूनिटी की बात करते हैं तो आपको इतनी चिढ़ती क्यों है? देखिए, हिंदू यूनिटी की बात करने में कोई बुराई नहीं। ये सब बाकी लोग कहते हैं तो आप क्लैप करते हैं। यू क्लैप, वेरी वेल डन मिस्टर ओवैसी, यू से वेरी वेल डन, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट। मगर कोई हिंदू यूनिटी की बात करे तो वाई सही करते हैं? आप इनसिक्योर है। वो सही करते हैं, आप इनसिक्योर की बात करते हैं। आप काटने की बात किसके लिए कर रहे हैं? नो, काटने की किसको काटने जा रहे हो भाई? तो इनसेना, what does he mean by cutting? This is a democratic country. आप किसको काटने की बात कर रहे हैं? तो इनसेना is responding, किसको काटने की बात कर रहे हैं? आपने देखा बहराइच में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया कि आपने वहां 2 घंटे के लिए पुलिस को छोड़ दिया। दंगे होने Unless these people deliberately want to be ignorant of history, in the last 100 years, we have seen Hindus being brutalized in Lahore, we have seen Hindus being brutalized in Karachi, we have seen Hindus being brutalized in Kashmir. Have they forgotten 1990, January 18th January 1990, where hundreds of Kashmiri Hindu family were victims of a genocide? और ये pretend करते हैं कि हिंदू कटे नहीं इस देश में। जहां जहां हिंदुओं की आबादी कम हुई है, जहां जहां हिंदुओं पर दूसरे लोग हावी हुए हैं, वहां हिंदुओं पर उत्पीड़न हुआ है, वहां जेनोसाइड हुआ है। और आगे कभी ना हो, इसके लिए हिंदू समाज को आगाह करना बहुत जरूरी है। अब महमूदा मुफ्ती के साथ आपने सरकार बना ली। आप क्या बात कर? बिल्कुल नहीं लिया, इसीलिए हमारी सरकार गिरी। तो इसीलिए हमारी सरकार गिरी। 14,000 पत्थरबाजों के खिलाफ इसीलिए हमने हमारी सरकार गिरी। इसीलिए हमने आर्टिकल 370 को निरस्त किया। अरे हमने आर्टिकल 370 को इसीलिए निरस्त किया ताकि ये सब हरकतें दोबारा ना हो। हमने तो आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया। One minute. A question is put here today repeatedly again and again. By the way, viewers, do you agree with Yogi Adityanath's Batenge Toh Katenge comment, which is trending subject number 1 tonight? Everybody is talking about it. RSS is backing it. Samajwadi Party is saying na batenge, na katenge. It's the number 1 issue. And the difference is Yogi Adityanath's approach is a direct, 100% direct approach. Tuhin, 1 minute. Shantanu is coming in next. Shantanu, before that, you are saying here today, किसको काटेंगे? Even Ratnakar Tripathi asked that.
I don't know whether you live in this No, I planet. didn't ask. Please. Okay, he is asking. Okay, he is asking. You are also on defensive today, Ratnakar Tripathi. No, I am not defensive. Defensive are you. No, you are. You are totally defensive. No, you are defensive. Who was in the power when Kashmir exodus happened? BJP. BJP was supporting VP Singh. And after 10 months, Ram Mandir Yatra, they took back the support. How You are on they say defensive. about- You are on Who was defensive. Mohit Pandey, who was killed in custodial death? You are on defensive. In Lucknow. You are on the defensive, How could one Ratnakar person Tripathi. dig a I'll tell you. grave? I'll tell you why. DMs Because found Kanpur. why? If you are not on defensive, if you are Ratnakar Tripathi, please allow me. If you are not on defensive, if you are not on defensive, if you are not on defensive, then when a Hindu girl is stabbed, when a Hindu girl, listen to me. You say that 80% are Hindus, and you do so. That is all right. And somebody, if they talk about Alpsankhyak, you say Muslim rakho, join Samajwadi Party. I am saying that just as I believe in equality, I believe in equality. Mr. Tripathi, can I respond to you? Can I respond to you, Mr. Tripathi? Mr. Tripathi, can I respond to you? Can I respond to you? I am the most, 1 minute. I am the only truly secular anchor in this country, constantly fighting pseudo-seculars like you. Let me tell you the truth. You see, when I tell you, Mr. Tripathi, please, Mr. Tripathi, you are senior to me. I don't want to speak over you, but if required, I will. If you want me to fight you, I will. Mr. Dr. Tripathi. आप सिक्त हैं. आपको कम्युनिज्म के सिरप में डुबो के निकाला गया है आपने. You are totally communal. You were never secular. You are not secular. And in your life, if the BJP government remains here, I have all the doubts it will be. Okay, now I'll tell you. I have dealt with 1 minute, Mr. Tripathi. Now listen, I have dealt with people like you for a very, very, very long time. Right? In 2001, 23 years back, when I wrote a book on the laws against terrorism, I said tougher laws are required. People like you said he's a right-winger. Unlike you, I do my research when I speak. Persons like you only come out from a position of personal angst and bitterness. Now listen to me. If a girl in April who is a Hindu is stabbed 14 times because the boy wanted her to convert to Islam and then the girl dies, and I say, is it a case of love jihad? You say, 1 minute. You say, is it happening on planet Earth? Nothing like this ever happened. And I tell you it is happening here, and we will fight it. Now, second reason, let me tell you who's communal. You said I am communal. Now, let me tell you, when a Hindu man is attacked for playing the Hanuman Chalisa, that Hindu man is secular, the people who attacked him are communal. When Tokir Raza wants a mass conversion of Hindu girls, when Tokir Raza wants a mass conversion of Hindu girls, but if a Hindu political leader would talk about a mass conversion of Muslim girls, you would say sartan se juda. When Kanhaiya Lal, 1 minute, when Kanhaiya Lal is beheaded in broad daylight, people like you celebrate it. You call that secularism. I call that the most communal thing that can happen in this country. When Kashmiri Pandits are attacked, you say they had a choice to return to their homeland. I said they didn't. They were made refugees in their country. That's why even a film hurts you. When Hindus celebrating India's T20 World Cup victory are attacked, you say it's freedom of expression. I call that communalism. Now, Mr. Tripathi, I live in this world, and in this world, there is nothing wrong with Hindu unity. Hindu unity should be welcomed by Hindus like you. I don't know why Hindus like you want Hindus to be divided. And let me tell you, if Hindus are divided, the country can't be united. I am a Hindu. I am a Hindu from Kachi. Right? You will be soon in minority. Are you saying a Hindu from Kashi is superior to a Hindu from Delhi? Why are you making these comments? What do you mean by saying that? No, you are not. कैसी comment है आपकी? I am a Hindu from Kashi? Yeah, Kashi is the academic seat. Oh, so that makes you a superior Hindu. That's your thinking. That's your understanding of Hinduism. That is the thing.
Kashi Vishwanath ji is there. My God. And Okay, that's now, of these are the country. people. These are the people who then say we support a caste census. Yeah. Getting a And these response are the from. people who say that Yeah, these are the 90% people. These are the people. Shantanu Gupta is Just responding. 20% of- Shantanu is responding to you. Ratnakar Tripathi. Just here for 2 minutes. Ratnakar Tripathi, you are on the back foot. You are like a Lambretta scooter that is refusing to start, but you want to take it for a ride. You can't. Become real. Yes. No, I am not saying you are right. Arnab, You have already been from taken for a ride Tilak by to BJP. Savarkar, from Tilak to Who are the BJP Savarkar, from students, Tagore to Arbindo, from Keshav Baliram Hedgawar to every RSS Sangh Pracharak told about the Hindu unity. Today, Yogi Adityanath has given an iconic vocabulary to it, and I think we are witness to it. Batenge Toh Katenge is the iconic vocabulary, the iconic grammar that UP Chief Minister Yogi Adityanath has given to the clarion call from Tilak, from Savarkar is giving. And you know from what is coming from the others, and you know what are the calls from the other side? From British to Rahul Gandhi. The call is divide and rule. So it's from divide and rule to Batenge to Katenge. From British to Rahul Gandhi, we heard a call. From Tilak to Yogi Adityanath, we heard a call. And it's a battle between divide and rule to Batenge Toh Katenge. And what we are hearing, Abu Azmi, while Let him Akhilesh complete, Yadav, I'll give you enough time. Abu Azmi, when Akhilesh Yadav was on the stage. Just hear this out. Just give me half a minute. Abu Azmi, when Akhilesh Yadav was on the stage, you know what did he said? जिस दिन अखिलेश भैया 8 MLA महाराष्ट्र में आ जाओगे, किसी माइकल लाल ने दूध नहीं पिया कि मुसलमान को कुछ भी कर पाए. The whole politics in front of Akhilesh Yadav is the Muslim politics. What is Mehboob Ali, the MLA from Roy, is saying? Muslim आबादी तो बढ़ रही है. Muslim population is increasing. We will win 2027 election only because of Muslim population. You know what is Sajjad Nomani? What is Sajjad Nomani saying? Sajjad Nomani, who is the member of Muslim Personal Law Board, he is counting Muslim vote percentage in every seat of Maharashtra. ये सीट तो मुस्लिम को ही जानी चाहिए. हम इसीलिए जीतेंगे. मुस्लिम को साथ में रहना चाहिए. But when Yogi Adityanath give this call, बटेंगे तो कटेंगे, see कैसे तड़प रहे हैं लोग, कैसे तड़प रहे हैं. साइलेश जी कैसे तड़प रहे हैं. अरे ये क्या कह दिया. Oh my God, अब क्या होगा. हमारा तो फॉर्मूला यही है. हिंदुओं को बांटो, मुसलमान को अपील करो. The thing is directly formula पे अटैक किया है. डायरेक्टली फॉर्मूला पे अटैक किया है. फॉर्मूला पे अटैक किया. दैट्स द प्रॉब्लम. पूरा पूरी जो पानी डाल दिया. एग्जैक्टली. नहीं, देखिए, मैंने पहले भी बैठते ही कहा था कि हिंदू यूनिटी से कोई दिक्कत नहीं है. दिक्कत आप वेलकम, आप क्यों नहीं कहते? आप लीजिए. लेकिन दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी नो आपको एक बताओ. सपोज देयर इज अ हिंदू watching the program tonight. Vivek, will you say to a Hindu watching the program tonight, कोई भी आपको बांटने की कोशिश करे, बटेंगे तो कटेंगे, आप भी बोलिए. बटेंगे तो कटेंगे, तो यही तो मैं बार बार आपको प्रॉब्लम है. इतनी गलत क्या गंभीर बात इतनी आसानी से आप कैसे ले रहे हैं? अच्छा, मैं तो बार बार पूछ रहा हूं. अर्नब जी, आप ही बता दीजिए. मुझे पूछ कौन कटेगा? मुझे पूछ. किसको काटने की बात योगी आप मुझे पूछ. यही बात महाराष्ट्र में हो रही है. आप मुझे पूछ रहे. यही बात हरियाणा में हुई है. क्या आप मुझे पूछ रहे? नहीं, क्या आप मुझे पूछ रहे? मुझे पूछ रहे. ठीक है, मैं भी. अच्छा, मैं जवाब दे रहा हूँ. मैं आपको जवाब दे रहा हूँ. मैं एम रिस्पॉन्डिंग टू यू. मैं 80-20 कपड़ों से पहचानना, ये तो भारतीय जनता पार्टी और एक तरह की पॉलिटिक्स होती है. इधर देखिए विवेक जी, एक और तरह की पॉलिटिक्स होती है, जिस पॉलिटिक्स में एक प्राचीन मंदिर पर जब अटैक होती है, जब गोरखनाथ मंदिर पर बड़ी अटैक होती है और अखिलेश यादव कहते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, छोटी घटना है, माउंटेन इज बीइंग मेड आउट ऑफ अ मोल हिल. एक प्राचीन मंदिर पर हमला होता है तो आपको वहां पे कुछ खटकती नहीं है, आप डाउन प्ले करना चाहते. ये किस तरह की पॉलिटिक्स होती है? मेरी बात सुनिए. मोहित खान पर डीएनए टेस्ट जब मांगी गई थी, जिन पर बलात्कार के आरोप थे, अखिलेश ने उनका फुल सपोर्ट क्यों किया? क्या ये नहीं था क्योंकि अगर मोहित खान पर कोई कार्रवाई हो तो मुस्लिम वोट उनको लगा हट जाएगी? तीसरा सवाल, क्या आप मानते हैं बटेंगे तक कटेंगे तब आप सवाल पूछते हैं, मगर अब जब सोनिया गांधी महमूद मदनी को मिलती हैं और उसके बाद महमूद मदनी कहते हैं कि बात हो रही है, सोनिया गांधी हमें मुस्लिम आरक्षण देने वाली है, तब आपको नहीं लगता कि ये अन्याय है भारत के हिंदुओं के साथ, पूरे देश के साथ? जब मनमोहन सिंह कहते हैं मुस्लिम फर्स्ट, पूरा पहला अधिकार भारत के रिसोर्सेज पर मुसलमानों का है, तब आपको नहीं लगता है? आप इस बैकड्रॉप को समझते हैं कि नहीं
इस बैकड्रॉप को आप समझते हैं कि नहीं कि आप आंख पे पट्टी लगाकर आप बात कर रहे हैं टेलीविजन पर? नहीं, मैंने इन चारों जो उदाहरण दिए, 4 एग्जाम्पल्स दिए आपको, क्योंकि हम तुष्टीकरण की राजनीति को समझते हैं. We know the politics of appeasement. Or what Yogi Adityanath is saying is a direct counter to the politics of appeasement. Please respond. आपने जो बातें की मैंने सुनी उसको. प्लीज देखिए, सुनिए. भारतीय जनता पार्टी गलत कुछ कहा क्या? फैक्चुअली कुछ गलत कहा क्या? भारतीय जनता पार्टी नहीं, फैक्चुअली कुछ भी गलत कहा क्या? आप मुझे बताइए. आपने नहीं कहा, सही कहा. मैंने सही कहा ना. आप मेरा काउंटर सुने. हाँ, बात सुनिए. देखिए, बताइए. आपको सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी करनी चाहिए. उन्होंने 2014 के मैनिफेस्टो में कहा था भी कश्मीर की बात बहुत प्राउडली की जा रही थी, गुप्ता जी कर रहे थे. 6000 कश्मीरी पंडित परिवारों को हर साल रीइंस्टेट करेंगे कश्मीर वैली में. एक को किया है तो बता दीजिए. तू इन सिन्हा को पत्थरबाजों को मासूम बता के पीडीपी के साथ सरकार बनाई, आतंकवादियों को टिकट दिया, और आप यहां बैठ के फॉर्मूला बता रहे हैं हमको. सिर्फ बांटने और काटने की राजनीति के सिवा भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं. और आप भूल गए बिहार में किस तरह दुर्गा के विसर्जन में हुई थी आपके बिहार में भारतीय जनता पार्टी. लास्ट मिनट ऑन द डिबेट. Twin Sinha responding. Batenge Toh Katenge is the debate. Last minute. Twin Sinha, last 30 seconds of the debate. Please take your turn and respond. अर्नब, ये जो बार बार कहते कि पीडीपी के साथ आपने अलाइनमेंट की, मैं आपको बता दूं कि इन हाइंडसाइट मे बी दैट इज एन एरर ऑफ जजमेंट, बट दोस 3 years helped us to understand the governance in Kashmir, and that was instrumental in us abrogating 370 conclusively and changing the fate of Kashmir forever. दोबारा कभी आप जैसे लोग जो है जेनोसाइड नहीं होगा. दोबारा कभी हिंदुओं पर इस प्रकार से अटैक नहीं होगा कश्मीर में. और कश्मीर में जिस प्रकार से दलितों के हक मिले हैं उससे आपको प्रॉब्लम है. जिस प्रकार से कश्मीर में पिछड़ों को पहली बार सरकारी जॉब्स मिले हैं उससे आपको प्रॉब्लम है. अरे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. आप पीडीए जो करते हैं, पीडीए जो उत्तर प्रदेश में करते हैं, क्या आपका पीडीए जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता है? जब वहाँ के दलित जो है 70 वर्षों तक calling for Hindu unity. 1 minute. Calling. 1 minute. I'm trying to understand here. Calling for Hindu unity इस समाज में घृणा फैलाना, मगर कोई हिंदू इंडिया के विन T20 में सेलिब्रेट करे और उनपे कोई मुस्लिम युवक अटैक करे तो वो राष्ट्रीय एकता के लिए एक बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है. जब अखिलेश यादव मोहित खान का समर्थन करते हैं, क्यों करते हैं? सोनिया गांधी जब मुस्लिम आरक्षण की बात करती है, क्यों करती है? जब मनमोहन सिंह ने मुस्लिम फर्स्ट की बात की, क्यों की? जब अखिलेश यादव ने गोरखनाथ मंदिर को अटैक पर छोटी बात कही तो क्यों कही? ममता बनर्जी ने मुस्लिमों को यूनाइट करने की बात की, चंद्रशेखर आजाद ने मुस्लिम दलितों को यूनाइट करने की बात की, तो आप कहते हैं राष्ट्रीय एकता की बात होती है. ओवैसी कहते हैं वन पॉलिटिकल यूनिट बन जाओ, तो आप कहते हैं बहुत बड़ी बात कही उन्होंने. भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बात कहती है. भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान की बात करे तो ठीक है, ईद दिवाली की बात करें तो ठीक है, 80-20 की बात करें तो ठीक है, कपड़ों से पहचान ले तो ठीक है, मंगलसूत्र की बात करें तो ठीक है. Okay, ladies and gentlemen, you tell me where you stand on that debate. It's been a really hot debate. Tell me what you think about it. Tell me whether you agree or disagree with Yogi Adityanath. And tonight, I'm concluding by bringing you a rage